morning to all. Welcome all BSc third year students. You can start semester 5th. Your paper number 13, physical chemistry. Next. पेपर नंबर 13 जो है ये आपको 50 मार्क के लिए रहेगा. इसमें 5 टॉपिक्स है. फर्स्ट है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, थर्ड फोटोकेमिस्ट्री, फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ नैनोमटेरियल. ठीक है. 5 टॉपिक्स: एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, फोटोकेमिस्ट्री, physical properties and molecular structure and nanomaterial. Today we can start nanomaterial. Actually you can heard the word nano, है ना. आपने nano ये word सुना है. That is nothing but the 1 billionth. That is nothing but 10 raised to minus 9. तो 1 nanometer is nothing but 10 raised to minus 9 meter. एक नैनोमीटर जो रहता है वो n की कितना रहेगा, 10 raised to minus 9 मीटर रहता है. नैनोमीटर इज एब्रीवेटेड एज nm. हम नैनोमीटर को क्या लिखेंगे, कभी भी nm ऐसा लिखते हैं कभी भी. ठीक है. नैनो यानी कि 10 raised to minus 9 यानी कि 1 बिलियन. 1 नैनोमीटर मीन्स 10 raised to minus 9 मीटर, 10 raised to minus 9. Understand? Nanoscale and nanotechnology are two of the latest field in today's scientific and commercial world. Nanoscience और ये nanotechnology जो है, these are nothing but the latest field in today's scientific and commercial world. The Nobel Prize has been awarded several times for research in nanoscience. Feynman, it is nothing but scientist name, is considered as father of nano. And this Feynman, he delivered a speech to American Physical Society in 1959 and said that why not mimic nature and produce smaller and smaller functional materials which will be highly efficient. Feynman जो है उसका अपन फादर ऑफ नैनो ऐसे कहते हैं, और उसने ऐसे कहा कि क्यों नहीं छोटा जो मटेरियल है वो फंक्शनल रहना चाहिए एंड इट शुड बी इफेक्टिव, और इफेक्टिव रहना चाहिए. The terms involved are, कुछ terms है जैसे nanomaterial है. Nanomaterial means nanomaterial, the matter which has dimension in between 1 nanometer and 100 nanometer is called nanomaterial. Nanomaterial यानी कि क्या रहेगा, the matter, that substance which has dimension in between 1 nanometer to 100 nanometer is called nanomaterial. 1 nanometer यानी कि how much, 10 raised to minus 9 meter. तो जो सब्सटेंस का डायमेंशन ये 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रहेगा, that substance is called as nanomaterial. Second term is nothing but nanoscience, the study of fundamental principles of molecules and materials with dimensions between 1 and 100 nanometer is called nanoscience. Nanoscience में क्या किया जाता है, it is nothing but study of fundamental principles of molecules and materials with dimension between 1 nanometer to 100 nanometer is called nanoscience. Understand? Third term है nanoscale. Nanoscale, the dimension which is expressed in nanometer or 10 raised to minus 9 meter is called nanoscale. The dimensions which is expressed in nanometer or 10 raised to minus 9 meter is called nanoscale.
Next term is nothing but nanotechnology. Nanotechnology, it is nothing but a branch of engineering. Nanotechnology क्या है? It is nothing but a branch of engineering which is based on application of nanomaterial into useful nanoscale devices is called nanotechnology. तो ये चार टर्म्स है, सिंपल टर्म्स है. फर्स्ट ही नैनोमटेरियल. नैनोमटेरियल क्या रहेगा? द मैटर विच हैज डायमेंशन इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर, उसे आप कहेंगे नैनोमटेरियल. जो सब्सटेंस जो है जिसका डायमेंशन 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है, उसको आपको नैनोमटेरियल करना है. 1 नैनोमीटर इज नथिंग बट 10⁻⁹मीटर. 1 नैनोमीटर यानी क्या रहता है? 10⁻⁹ मीटर रहता है. सेकेंड था नैनो साइंस. नैनो साइंस में क्या किया जाता है? स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मटेरियल्स with dimension in between 1 nanometer to 100 nanometer is called nanoscience. थर्ड टर्म जो है वो है नैनो स्केल. नैनो स्केल. नैनो स्केल में क्या रहेगा? द डायमेंशंस which is expressed in nanometer or 10⁻⁹ meter is called nanoscale. The dimension which is expressed in nanometer, that is 10⁻⁹ meter, is called nanoscale, यानी कि 1 नैनोमीटर. Secondly, nanotechnology. Nanotechnology is nothing but a branch of engineering which is based on application of nanomaterials into useful nanoscale devices is called nanotechnology. ये चार terms आते हैं generally. Then nextly we can see some its basic applications of nanomaterials. Nanomaterial जो है इनका बहुत से applications है, बहुत से we can say uses है. इन एनर्जी सोर्सेस में है, एटम बॉयज फील्ड है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, कॉस्मेटिक्स है एंड मेडिसिन. तो वी कैन सी वन बाय वन. इट इज नथिंग बट द इंट्रोडक्शन पार्ट. ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट है. तो फर्स्ट वी कैन सी द एनर्जी सोर्सेस. एनर्जी सोर्सेस में क्या यूज है नैनो मटेरियल्स का? नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड इन सोलर सेल्स. सोलर जो सेल्स रहते हैं उनमें नैनो मटेरियल का यूज किया जाता है. कार्बन नैनो ट्यूब्स आर यूज्ड टू स्टोर हाइड्रोजन फ्यूल. हाइड्रोजन फ्यूल जो रहता है उसको स्टोर करने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज किया जाता है. thirdly, rechargeable batteries of electronic devices like laptop, mobile, CD players. ये जो रिचार्जेबल बैटरी जो यूज की जाती है इनमें भी नैनो मटेरियल का यूज किया जाता है. These are nothing but the energy sources. ये पूरे एनर्जी सोर्सेज जो है इनमें नैनो मटेरियल जो है इनका यूज किया जा रहा है. नेक्स्ट है टेक्सटाइल. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है that nano coated fabrics has sharp look and used in hospitals. नैनो कोटेड जो फैब्रिक्स रहते हैं उनको एक शार्प लुक रहता है, इसलिए these are used in the hospitals. Special threads and dyes used in textile industries are products of nanotechnology, and these clothes do not require frequent cleaning. Some companies are trying to use silver nanoparticles in washing machine which make clothes germ free. ठीक है. These are the some uses of nanomaterial in textile industry. हॉस्पिटल में यूज होता है. कुछ स्पेशल थ्रेड्स या डाइज जो है दे आर यूज द नैनो टेक्नोलॉजी एंड दे कैन प्रिपेयर सच टाइप ऑफ क्लोथ्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंटली क्लीनिंग. और ये जो ऐसे जो क्लोथ्स है जनरली दैट मिलिट्री फील्ड या फिर हॉस्पिटल्स में भी इनका यूज किया जाता है. Also, some companies are trying to use silver nanoparticles in washing machine. वॉशिंग मशीन में भी सिल्वर नैनो पार्टिकल का यूज किया जा रहा है सो दैट द क्लोथ विल बी जर्म फ्री. ये होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. नेक्स्ट जो फील्ड है वो है एटोमोबाइल्स. ठीक है. इन एटोमोबाइल फील्ड्स जनरली दैट विंडोज ऑफ ऑडी A4 सीरीज कार्स आर कोटेड विद glass laminated that blocks harmful UV radiations that can cause skin cancer. अभी बहुत से जो कार्स है या 4 व्हीकल्स है इनमें ग्लास जो रहते हैं उनके कोटिंग के लिए भी नैनो मटेरियल का यूज किया जाता है सो दैट दे कैन ब्लॉक दी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. यूवी जो रेडिएशन उसको स्टॉप करता है. To prepare mechanical properties of tires, sorry, to improve mechanical properties of tires,
टायर्स जो रहते हैं व्हीकल्स के, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए, उनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए भी नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नैनो मटेरियल्स बेस्ड कैटलिस्ट आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन एटम बॉल्स। एटम बॉल्स की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, वो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी नैनो मटेरियल जो है इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉस्मेटिक्स। भी कॉस्मेटिक्स जो है इनमें भी नैनो मटेरियल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे जिंक ऑक्साइड है या टिटेनियम ऑक्साइड है, ये जो नैनो पार्टिकल्स है ऑफ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज, दे कैन एब्जॉर्ब यूवी रेडिएशंस एंड दे कैन प्रोटेक्ट द स्किन। ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं एंड देयरफॉर दे आर यूज्ड इन फेस पाउडर एंड स्किन लोशंस। तो नैनो पार्टिकल्स बेस्ड फेस पाउडर एंड स्किन लोशंस आर यूज्ड। Nano-based dyes, colors are quite harmless to skin and can be used in hair creams or gels. Nano-based dyes और color जो है ये कम harmful रहते हैं. That's why they can use in skin and also in the hair creams or gels also. Next है medicines. Nanomaterials are also used in the medicines. Nanomaterials are successfully used in diagnosis and treatment of various diseases. नैनोमटेरियल जो है इनका यूज डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस के लिए भी किया जाता है। जैसे गोल्ड नैनो रॉड्स है। गोल्ड नैनो रॉड्स दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल इन रैट्स विदाउट अफेक्टिंग द हेल्दी सेल्स। गोल्ड नैनो रॉड्स का यूज कैंसर सेल डिटेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है विदाउट अफेक्टिंग दी हेल्दी सेल्स। नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नैनो टेक्नोलॉजी की यूज आज ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलकर भी किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी यूज्ड टू डिटेक्ट ई कोली, डीएनए, प्रोटीन्स एंड एंटीबॉडीज। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज ये ई कोली, डीएनए, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज इनको डिटेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। Lastly, nanophosphorus are used to image certain parts of body like bones, dentistry, etc. Nanophosphorus जो है इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो that to take the images of the bones, बोन्स जो रहते हैं उनके इमेज लेने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। तो these are the some uses or we can say that some applications of नैनो मटेरियल्स। तो ये नैनो मटेरियल जो है इनका यूज एनर्जी सोर्सेस में भी किया जाता है, एटम बॉयल्स में भी किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी किया जाता है और मेडिसिन में भी किया जाता है। इन डिफरेंट फील्ड्स नैनो मटेरियल्स आर यूज्ड। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट। इसलिए ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। देन वी कैन गो टू द सिंथेसिस ऑफ नैनोमटेरियल्स। अब ये जो नैनोमटेरियल्स है, हाउ वी कैन सिंथेसाइज, इसको हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? तो दे आर देयर डिफरेंट टेक्निक्स और वी कैन से देयर आर डिफरेंट मेथड्स। बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स वी कैन प्रिपेयर और वी कैन सिंथेसाइज नैनोमटेरियल्स। फॉर एग्जांपल फिजिकल मेथड, एक एग्जांपल है फिजिकल मेथड। अब फिजिकल मेथड में देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स। हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड है, मेल्ट मिक्सिंग है, मैकेनिकल अलॉइंग है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन है, ठीक है, एक्सेट्रा। अंडरस्टैंड? लेकिन आपके सिलेबस में खाली इसमें से क्या है? हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड एंड फिजिकल वेपर डिपोजिशन मेथड, ओनली टू मेथड्स। नेक्स्ट है केमिकल मेथड। और इन केमिकल मेथड और इन केमिकल दिस टेक्निक वी कैन प्रिपेयर दी नैनो मटेरियल्स। आप नैनो मटेरियल्स अलग अलग मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट एग्जांपल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम कोलाइड्स, सोल जेल, ठीक है, प्लाज्मा, केमिकल टेक्निक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल मेथड। बाय यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड वी कैन आल्सो प्रिपेयर द नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स आप बायोलॉजिकल मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय यूजिंग बायोमेम्ब्रेन्स, बाय यूजिंग डीएनए और बाय यूजिंग एंजाइम and microorganisms
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजी, ईस्ट, ये जो है इनका यूज करके भी आप नैनो मटेरियल सिंथेसाइज कर सकते हैं. या by using enzymes we can also prepare the nanomaterials. Yeah, by using DNA we can also prepare the nanomaterials. So by using biomembranes we can prepare the nanomaterials. And last is nothing but the hybrid method. This hybrid method, that we can there are the different examples: electrochemical, chemical vapor deposition, microemulsions, or by using the polymers, etc. So these are the four techniques or four methods by which we can prepare the nanomaterials. So out of these, we can prepare the nanomaterials is by using that physical method, by chemical method, and by using the biological methods. So first we can see the high energy ball milling method. The high energy ball milling method जो है ये मैकेनिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स. ठीक है, ये मेथड में क्या किया जाता है? इन दिस मेथड, in this mechanical method or in this high energy ball milling method, we can synthesize or we can prepare the nanomaterials. So the mechanical treatment of solid leads to refining and plastic deformation of substances, acceleration of mass transfer and mixing of the components of the mixture on atomic level. So there are many types of mills: planetary, vibratory, rod, tumbler, etc. So in this example, we can see only the planetary method. Planetary जो बॉल मिलिंग मेथड है उसका इसमें यूज किया जाता है. See the diagram. Okay, this is the diagram of बॉल मिलिंग मेथड. ये बॉल मिलिंग जो मेथड है उसकी हाई एनर्जी बॉल मिलिंग जो मेथड है इसकी ये डायग्राम है. इट इज जस्ट ए सिंपल डायग्राम. दिस इज नथिंग बट ए कंटेनर. एक कंटेनर रहेगा, अंडरस्टैंड. इसमें इट्स नथिंग बट द क्रायो कूलिंग अरेंजमेंट. दिस इज नथिंग बट द मटेरियल. ये मटेरियल है जिसका अपने को कन्वर्जन नैनो मटेरियल में करना है, जिसका डायमेंशंस 10⁻⁹ मीटर रहेगा. 10⁻⁹ टू 1 to 100 नैनोमीटर के बीच में रहेगा. एंड देयर आर सर्टेन हार्ड स्टील बॉल्स, वी कैन मिक्स इट. दिस इज इनर्ट गैस और एयर. ये ऊपर का जो पोर्शन इट इज नथिंग बट द लीड and this is nothing but a one rod. We can rotate it. We can see the working. First we can see the working, how it works. इसका पहले अपन कंस्ट्रक्शन या वर्किंग देखेंगे. A container with cryocooling arrangement is taken. A container with cryocooling arrangement is taken. Hard steel or tungsten carbide balls are put in containers. Powdered of flake materials in 2:1 mass ratio of ball to materials. बॉल टू मटेरियल का जो रेशियो रहेगा 2:1 रहेगा. is taken in container. It is closed with light lid. See here, we can say that a container, ये कंटेनर है जिसमें क्या रहेगा? क्रायोकूलिंग अरेंजमेंट रहेगी. दिस नथिंग बट द क्रायोकूलिंग अरेंजमेंट. Here we can say the hard steel balls, हार्ड स्टील और टंगस्टन कार्बाइड बॉल्स. टंगस्टन कार्बाइड या हार्ड स्टील जो रहता है उसकी ये बॉल्स रहते हैं. पुट इन द कंटेनर. देन पाउडर जो रहेगा, यानी कि जो मटेरियल का आपको कन्वर्जन नैनो मटेरियल्स में करना है वो पाउडर इसमें लिया जाएगा. और इसका जो मास टू रेशियो रहता है 2:1 ऑफ बॉल टू मटेरियल्स. The balls will be more and double than the materials in the container. It is closed with the lid. ये पूरा जो कंटेनर है उसको अपन लीड से क्लोज कर दे देंगे. एंड रिमेनिंग पोर्शन जो रहता है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द कंटेनर, इट इज फिल्ड विथ एयर और इनर्ट गैस. ये ऊपर का जो पोर्शन रहेगा, रिमेनिंग जो पोर्शन रहेगा
उसमें इनर्ट गैस या फिर एयर रहेगा। द कंटेनर इज रोटेटेड। अब ये जो कंटेनर है इसको क्या किया जाएगा, रोटेटेड एट हाई स्पीड अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वी कैन रोटेट दिस कंटेनर, दिस इज एक्सिस, understand? So we can rotate the container with high speed around its own axis. Additionally, the container is rotated around some central axis. Hence, it is called as planetary ball mill. इसको planetary ball mill क्यों कहा गया है? Because we can say that ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक में आप क्या करते हैं, we can take the hard steel, tungsten, carbide balls and the material in the ratio of 2:1, and the container is rotated at high speed. ये जो कंटेनर है इसको अपन हाई स्पीड से रोटेट करते हैं अराउंड इट्स ओन एक्सिस. Additionally, the container is rotated around some central axis, and hence it is called as planetary ball mill. इसलिए अपन इसको planetary ball milling कहते हैं. By controlling the speed of rotation of central axis and container as well as the duration of milling, it is possible to ground the material to fine powder within few minutes to few hours. ये मेथड से आप ये जो स्पीड जो है ये कंट्रोल करके आपको जो नैनो पार्टिकल की साइज चाहिए या आपको जो नैनो पार्टिकल मटेरियल की साइज चाहिए वो साइज में आप उसको कन्वर्जन कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? इट्स अ सिंपल मेथड, एक सिंपल मेथड है. बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर द नैनो मटेरियल्स. इट इज नॉट बट द हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड. ये हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड है. कंस्ट्रक्शंस वर्किंग अभी जैसे बताया वही सेम है. The container with cryo-cooling arrangement is taken. Hard steel or tungsten carbide balls are put in containers. Powder of that material is 2:1 mass ratio of ball to material is taken in the container and it's closed with light lead. The remaining portion of the container is filled with air or inert gas. The container is rotated at high speed around its own axis. Additionally, the container is rotated around some central axis. Hence, it is called as planetary ball mill. इसलिए इसको planetary ball mill ऐसा कहा जाता है. By controlling the speed of rotation of central axis and container as well as duration of mill, it is possible to ground the material to fine powder within few minutes to few hours. स्पीड कंट्रोल करके आपको जो मटेरियल की साइज चाहिए वो साइज आपको मिल सकती है. वी कैन कन्वर्ट द पाउडर इनटू द नैनो मटेरियल्स. जो कुछ भी फाइन पाउडर है उसका आप नैनो मटेरियल्स में ये मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं. एडवांटेज क्या रहेंगे इसके? इट प्रोड्यूसेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ nanocrystalline पाउडर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ये मेथड से आप लार्ज स्केल में नैनो मटेरियल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे मेटल्स है, अलॉयज है, इंटरमेटेलिक्स है, सिरेमिक्स है, composites है, एक्सेट्रा. So these materials can be prepared by using this method. It is possible to synthesize materials with mean size of 200 to 5 to 10 nanomaterials. ये मेथड से आप डिफरेंट साइज के नैनो मटेरियल्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. मैकेनोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ नैनोक्रिस्टलाइंस, जैसे टिटेनियम कार्बाइड है या ZrC है, VC है, NBC है, एक्सेट्रा. So they will be possible. We can prepare this mechanical synthesis of that nanocrystallines of that carbides by using this high energy ball milling methods. Okay, so the question will be asked for 10 marks. Explain high energy ball milling method with diagrams. Okay, so in that we can give the principle. First, we can give the principle here. The principle is simple of this high energy ball milling method. This is a mechanical method of synthesis of nanomaterials. The mechanical treatment of solid leads to refining the plastic forms of substances, isolate of mass transfer and mixing of the components of the mixture on atomic level. There are many types of mills, लेकिन अभी अपन जो देख रहे हैं वो है खाली planetary only. Then you can draw the diagram. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है.
Then you can write the construction and working. Construction या working एकदम simple है. The container with cryocooling arrangement is taken. Hard steel or tungsten carbide balls are put in containers. Powder of that material will be taken at 2:1 mass ratio. A ball to material is taken in the container. Okay. Then that remaining portion of the container is filled with air or inert gas. The container is rotated at high speed around its own axis. Okay, और ये जो है it is nothing but the planetary ball milling method है, because the container is rotated around some central axis, hence it is called as planetary ball milling method. By controlling the speed of rotation of central axis and container as well as duration of milling, it is possible to ground material to fine powder within few minutes to few hours. Understand? And lastly, you can give the advantages. Advantages are also simple. It produces large quantities of nanocrystalline powders of different materials, metal, alloy, intermetallic, ceramic, composites, etc. It is possible to synthesize materials with mean size, and we can also prepare the mechanochemical synthesis of nanocrystalline, जैसे titanium carbide, HRC, VC, NBC, etc. is possible with this high energy ball milling method. Any queries? Any question? हाँ नहीं ये करनी थी नहीं, क्या बोलते हैं अलाउड पार्टिसिपेट कहाँ है यहाँ पे पार्टिसिपेट उनको अनम्यूट कर दे. Yes, any question? If you have any question, you can also say it in the chat box. अगर किसी कुछ क्वेश्चन है तो ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा आपको. और बाकी का फर्स्ट जो पार्ट अपने देखा है इट इज नथिंग बट द बेसिक. आज अपने जो पढ़ाई की है इसके अंदर, तो फर्स्ट जो पार्ट था हाँ ये स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन जो इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, ये स्टार्टिंग का जो पार्ट है इंट्रोडक्शन पार्ट है. जनरली आपको इसमें एमसीक्यू जो रहते हैं उसमें आ सकता है आपको, जैसे दी 1 nanometer is equal to how much nanometer. You may write that 1 nanometer is nothing but 10 to the minus 9 meter. Or these terms, this father of who is father of nano. The Feynman is nothing but the father of nano. Then he can deliver a speech in 1959. और these terms, ये जो terms है इसमें के nanomaterial, nanoscience, then nano scale, nanotechnology, ये terms MCQ में आ सकते हैं. या फिर एप्लीकेशन जो रहते हैं नैनो मटेरियल्स के, एनर्जी सोर्सेस है, एटम बॉयल्स है, टेक्सटाइल्स है, कॉस्मेटिक्स है, मेडिसिन है. ठीक है, तो ये पूरा बेसिक पार्ट्स है. और एक्चुअल जो रहेगा आपको थ्योरी के लिए जो आएगा वो रहेगा एक्सप्लेन हाई एनर्जी बॉल मिलिंग मेथड. इट इज फॉर 10 मार्क्स. ये 10 मार्क्स के लिए रहेगा. इसमें आपको प्रिंसिपल्स लिखने का पहले, देन यू कैन ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ करना है. उसके बाद कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना है. देन इट्स एडवांटेजेस फॉर 10 मार्क्स. एनी क्वेश्चन? किसी कुछ क्वेश्चन है क्या? अभी मैंने आपको यस हाँ, कॉस्मेटिक जो है सभी कॉस्मेटिक में नैनो मटेरियल्स का यूज किया जाता है. लिक्विड्स रहेगा ना, लिक्विड भी रहता है. दैट फेस पाउडर जो है उनमें भी नैनो मटेरियल का यूज किया जाता है.
एनी क्वेश्चन? अनम्यूट कर देगा। किसी कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसका आपको टाइम बता दिया जाएगा। थैंक्स ऑल, थैंक यू।